Welcome to the next session. In this session, I will complete three topics from page number 15 to 18. First is seals, scripts, and weights. Second is ancient authority. The third one is the end of civilization. Right? So first of all, I want to discuss about the seals. Seals and sealings were used by the Harappans for the long distance communication. Suppose they wanted to send some goods from one place to another. So, what they have done? Let's see. They tied the mouth of the bag with a rope, and that knot is affixed with the wet clay. On that, one or more seals will be pressed so that the impressions they leave an impression. If the bag reached its ceiling intact, it meant that it had tampered, not been tampered. मतलब खराब नहीं, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ या आपको कोई खोला नहीं ऐसे. And also the sealing also conveyed the authority, means the identity of the sender. मतलब सील्स एंड सीलिंग यूज करते थे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए. कैसे सामान बेचते थे? वो बड़ा सा बैग में सामान रख करके सामान का जो बैग का माउथ को उसने रस्सी से बांध लेते थे. बांधने के बाद वो गांठ बनाएंगे. गांठ में क्या करेंगे? गांठ पे ऊपर आपको वेट क्ले, गीला क्ले लगाएंगे, एक फिक्स करेंगे. उसके ऊपर वन और मोर सील्स का इंप्रेशन दे देंगे. अगर जब उस आदमी के पास जिसके पास पहुंचना है उस आदमी के पास अगर विदाउट डैमेज ऑफ द सील, तो वो समझ सकता है कि समझ जाएंगे कि ये तो खराब नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल अच्छा है. इसके अलावा क्या है कि जो सीलिंग्स है यूज टू कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु हैज द सेंटर, कौन सेंड किया है उसका भी आइडेंटिफिकेशन होता है. नेक्स्ट इज दैट स्क्रिप्ट के बारे में. स्क्रिप्ट के बारे में बताने के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस टाइम ऑल्सो द क्वेश्चन आस्क्ड. इट इज नोन एज हैरपन script is known as an enigmatic script. Enigmatic. What is the meaning of enigmatic? Enigmatic means it is very difficult, puzzled, mysterious. Script mysterious है. Really, the script is totally mysterious. अब आपको पता चलेगा कि क्यों mysterious कहते हैं, क्यों इसको puzzled कहते हैं. Seals usually seals having the क्या बोलेंगे इसका line of writing. Not alphabetical. Script are not alphabetical line of writings. Encryptions are short होता है और सबसे बड़ा जो बिगर राइटिंग होता है आपका 26 साइंस वाला. नंबर ऑफ साइंस आर देयर नियर अबाउट 375 से 400 साइंस, and these are written from right to left. Normally we are writing from left to right है ना, and they wrote their signs and signboards वगैरह ऑब्जर्व किया एस्ट्रोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस and understood that their writing was from a right to left, and they leave the space also from the right side, and cramping के लिए और फास्टनिंग के लिए लेफ्ट साइड में यूज किया था. सो स्क्रिप्ट के बारे में पूछे तो बोलेंगे इट्स एनिग्मेटिक. इट्स एनिग्मेटिक मीन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लाइन ऑफ राइटिंग यूज किया, नॉट अल्फाबेटिकल. साइंस उसने 26 लॉन्ग जो इंक्रिप्शन है 26 साइंस का है, और मोर देन 400, इन अबाउट 400 साइंस वेर देयर, एंड इट वाज नॉट डिसाइफर्ड एट. डिसाइफर्ड का मीनिंग अभी तक डिस्कवर नहीं किया, मतलब डिस्कवर करना. नॉट डिसाइफर्ड, अभी तक डिस्कवर नहीं किया. स्क्रिप्ट के बारे में नोबडी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिस्टीरियस और पजल्ड, राइट. एंड क्या बोलेंगे, दिस राइटिंग हैज बीन फाउंड इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक सील्स, terracotta tablets, copper tablets, tools, number of things. So मिल चुका है. Next we are going talking about the weights. The exchanges were regulated with a precise system of weights. जो weight का बिल्कुल accurate system यूज किया है. For that they used one stone. वेई करने के लिए, जो वेट लेने के लिए, नापने के लिए उसने एक स्टोन यूज कर. स्टोन का नाम है शर्ट, नॉट द शर्ट,
CHERT, shirt. What is shirt? Shirt is the dark, hard, opaque stone. Dark, hard, opaque stone. And this is used for weighing the objects. Right? And this is cubical in shape. There was no marking also. Denominations also, small denominations, bigger denominations, like that. Denomination is in the binary form, 1, 2, 4, 8, 16, 32, up to 12800. Bigger denominations followed the decimal system, and smaller denominations all used for the weighing of this jewelry and the beads. Right? This was a system. Now, the next topic is the ancient history. एंशंट हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे. तो एंशंट हिस्ट्री मीन्स एंशंट अथॉरिटी है उनका, मतलब हैरपन्स के अथॉरिटी के बारे में, वेदर सम रूलर्स वेर देयर, है ना. देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन अबाउट द रिगार्डिंग द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ हैरपन हैरपन civilization or any rulers. There was no particular information, but archaeologists got some information regarding the complex decisions and all, because evidences of complex decisions and implementations का उनके पास है. Even आपको clearly पता है कि about bricks, isn't it? We talk about the bricks, standardization, ratio, length equals to 4 times height, breadth equals to 2 times height. That is entire Harappan region में that is implemented. So complex decision हर जगह पर एक जैसे use करना. And also settlements. These settlements are normally they used to settle near the raw materials, where the raw materials are found. So this planned है. So इसके बारे में तो clear हमारे को पता चल रहा है. But there is no evidence of the rulers and all. But the archaeologists find massive structure in Mohenjo-daro. Big building they found in Mohenjo-daro, and they called it as a palace. But unfortunately, there is no such information. Means there is no spectacular finds whereabout associated with it. Palace तो बनाया गया, बताया palace से करके, but no spectacular finds they got. Same as it is, they got the image, मतलब जो this statue of priest king. आपका बुक में साइड में जो उसका इमेज भी रखा है, तो प्रीस्ट किंग के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिल चुका है, मतलब जो मिल चुका है. गॉट अ स्टोन स्टैच्यू and that was labeled as priest king. It was so because they had the idea about the Mesopotamian society and the priest king of Mesopotamia. They are also the same statue, priest king. So they called it also as priest king. If so, 100% some rituals also will be there. But the historians are unaware about the rituals of Harappans, and there are no means of whether those who perform the ritual practices and also held political power, कोई ऐसे कोई राजा है उसको फॉलो करने के लिए कौन से practices है, ritual practice क्या है, कुछ नहीं पता है. This is fact. This is the truth that they found this palace like structure and the priest king, but unaware about these things. कौन सी है कि आपका rituals के बारे में, unaware about the power के बारे में, right? So like some historians having some ideas, like different historians having different ideas. Some historians used to say that there was no such ruler for this Harappans. All enjoyed equal rights. All enjoyed equal right. And some historians argued, no. Rulers were there. Each and every region having different rulers. That means not a single ruler, number of rulers. Mohenjo-daro is having one ruler. Next up, Dholavira is having another ruler. Harappa is having another ruler. This was the idea of another group of archaeologists. But the third group, that is important, that to be noted. They suggested that entire Harappan region was under one ruler, and this is considered as one state. For that, they have given the proof also. What type of proof? That you also know. What type of proof? Because especially we can say that bricks, standardization. Entire Harappan region में same आपका bricks मिला है, right? सब जगह के एक ही bricks मिला है. These are example.
And apart that, the settlements, all the settlements are near the raw material. Where the raw materials are available, there only they planned city and planned settlements. These are the similarities. And apart that, seals, artifacts, all these similar है. All हर एक जो region में आपको similar है. From this only we can understand that the third view is most probably plausible. Plausible means reasonable, means acceptable. जो historians किसी ने बोला है कोई रूलर नहीं है, सारे इक्वालिटी था. किसी ने बोला कि नहीं हर जगह में आपका रूलर्स हैं. और लेकिन थर्ड लोगों ने बोला कि नहीं पूरे एक स्टेट उसके अंदर एक ही राजा था करके, एक ही रूलर था, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज. दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस थियरी, लास्ट थियरी सीम्स टू बी मोर प्लॉजिबल. प्लॉजिबल का मतलब रीजनेबल, एक्सेप्टेबल. अपार्ट दैट वन मोर थिंग, ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट द सिमिलैरिटी. इसलिए आपको पता है सिमिलैरिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में. So this also give an encouragement for this third group of archaeologists to prove themselves true, right? And the last topic is the end of civilization. एंड ऑफ सिविलाइजेशन में हमने बताया गया है कि जो बुक में बताया कि नियर अबाउट 1800 BC में आपको हारप्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हारप्पन सिविलाइजेशन जैसे चौड़िस्तान वगैरह में आपको अबेंडन होना शुरू कर दिया. Many more population also shifted from one place to means from that area to Gujarat, Haryana, like जगह पे चला गया. And they started means बड़ा सा massive structures वगैरह खत्म हो गया है. मतलब जो उसका massive structure जो हो गया है वो सब कुछ जो बनते थे वो खत्म हो गया. Little fewer things, fewer items बनाना शुरू कर दिया. And इसमें बहुत changes आ गया है. isn't it? So civilization का एंड होना शुरू कर दिया. एंड civilization कैसे एंड हो गया ये भी तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट मतलब जो व्यूज है. Some people used to say that this civilization end because of the floods. Various reasons they are saying: floods, earthquake, aggression of Aryans, and droughts, epidemics, like various things. Floods might be floods because many archaeologists suggested that Indus and its tributaries were there. Because of that floods only these areas totally abandoned, you know. And earthquake, that also possible because Lothal, आपको पता है कि आज भी Lothal is a earthquake prone area, isn't it? So earthquake से बहुत कुछ आपका ये सब कुछ गिरा, सिटी पूरा submerged means under हो गया होगा. This also possible है. Some climatic changes also. This also used to say. हारप्पन आपको मोहनजोदड़ो फिल्म अगर देखे तो पता चलेगा वहाँ पर सिंधु नदी जो बाढ़ आ गया था, बाढ़ आने से वो सिटी पूरा डाउन हो गया था, isn't it? So different views है. तो views पूछे तो बोलेंगे कि climatic change हो, drought हो, हाँ. So this also possible because some archaeologists suggest that might be the drought happened and they are unable to eat something, isn't anything. So they got less immunity power. लेस इम्यूनिटी पावर की वजह से क्या करेंगे, जो आपको बीमारियां आ जाएंगी, दैट एपिडेमिक बन जाएगा, जैसे कोरोना है, इसलिए महाव्याधि वो बन गया होगा. इस तरह जो हारप्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया होगा. इसके अलावा कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं अग्रेशन ऑफ आर्यंस अटैक कर दिया है. मेनी वॉर्स ऑल्सो डिस्ट्रॉयड दिस हारप्पन्स. दे ऑल्सो डिफीट मेनी वॉर्स इन सच ए वे दे ऑल्सो देयर सिविलाइजेशन एंड. Right? These are the topics. They are the main points of this topic. Just read the chapter. इतना टाइम मेरे साथ जो सुनी है मैं उनसे पूछता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, whether she understood or not. ठीक है. सबसे पहले I just wanted to ask about the Harappan seal के बारे में. Dear, tell me something about the Harappan seals. Do you understood about the seals? बताइए. Yes, seals and sealings, they are used for the longer distance communication. And imagine if a bag of good, it is tied with a rope. Means send from one place to another. And if it is tied with a rope and on note it is sealed with a wet clay. मतलब that means जो नोट पे उसने wet clay पहले लगाएंगे, then आपका seal impression देंगे. ठीक है मानो. अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा कोई आइडेंटिटी देता है ये seal is giving some identity?
It gives the idea of the Sender. sender. ठीक है. And the script, historians used to say the script is enigmatic. What is the meaning of enigmatic? difficult, mysterious हाँ, puzzle. वो तो रट के रखी है क्या? नहीं. नो, कोई भी एक हो ना, मिस्टीरियस आपका बोलो या आपका पजल बोलो है ना, कुछ भी बोल सकते हैं. सो हाउ कैन यू से दिस? अच्छा, कैन यू से सम फीचर्स अबाउट दिस स्क्रिप्ट ऑफ हारप्पन? They use line of writing. It is not alphabetical. They use animal motif. What is motif? What is the meaning of motif? Picture. पिक्चर मतलब मोटिव मैंने आपको बताया नहीं शायद, पिक्चर है. ठीक है, विच इमेज ऑफ एनिमल. व्हाई दे यूज दिस एनिमल मोटिव? बिकॉज this is used for the people those who could not read. जो रीड करना नहीं आता उनके लिए दिस इज एक मीनिंग देते हैं जो एनिमल का मोटिव्स. राइट, यस. And it is not alphabetical. हाउ मेनी अभी तक कितना जो आपका साइंस है जो आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट किया है? 375 and 400. 375 to 400. एंड अभी तक इसका स्पेशलिटी अभी तक ये डिसाइफर नहीं हुआ, मींस डिस्कवर नहीं हुआ है. ठीक है. एंड कहाँ कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स में अभी तक मिला है जो आपका ये seals, terracotta tablets, copper tools and jewelry, etc. एक्सेट्रा. ठीक है, करेक्ट है. इसके अलावा क्या बोलेंगे, फिर क्या है आपका सील का वेट के बारे में बताओगे? वेट it is उसके लिए एक स्टोन यूज किया था. व्हाट इज द नेम ऑफ शर्ट? स्टोन का नाम है शर्ट. CHERT शर्ट. एंड शर्ट कैसे होता है, मीन्स क्या है? व्हाट इज शर्ट? it is a hard, dark or opaque ऑब्जेक्ट. एंड इट इज कौन सी शेप में होता है? it is in cubical शेप. देयर इज नो मार्किंग आल्सो. राइट. एंड वेट्स जो आपको बाइनरी फॉर्म से होते हैं. ठीक है. शॉर्टर जो स्मॉल जो बाइनरी फॉर्म्स है वो किस लिए यूज करते हैं? it is used for making jewelry. मेकिंग ज्वेलरी नहीं, वेइंग Weighing ज्वेलरी, jewelry. नॉट मेकिंग ज्वेलरी. Weighing वेइंग ज्वेलरी मीन्स ज्वेलरी को वेट नापने के लिए, ठीक है, तौलने के लिए यूज करते हैं. अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो उसके बारे में मीन्स एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में. अच्छा, डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैविंग डिफरेंट व्यूज, मेनली 3 व्यूज के बारे में बता दीजिए 3 व्यूज. The 3 views are, some archaeologists they believe that Harappan civilization has no ruler and All enjoyed equal rights. all enjoyed equal rights, and others they believe that they suggest that there must be several rulers. For example, Mohenjo-daro must have separate ruler or Harappan have separate ruler. And third view was the archaeologists they suggest that there is only a single ruler ruling the Harappan civilization. And their society, that means one state and one ruler. ठीक है. उसके एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, प्रूफ दिया है. क्या प्रूफ है? ब्रिक्स का प्रूफ दे दिया, स्ट्रक्चर का दिया. मीन्स सेटलमेंट आपका जो नदी किनारे किया है, जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है वहां पर किया है. ये सब कुछ एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, एंड ऑफ सिविलाइजेशन ये कैसे एंड हो गया, मतलब हिस्टोरियंस क्या सजेस्ट करता है कि हाउ दिस हैपेंड, दिस सिविलाइजेशन. जैसे कि बताया था कि जो सिविलाइजेशन क्या बोलेंगे मैच्योर के बाद आपको खत्म होने शुरू कर दिया है ना. वेट्स वगैरह खत्म हो गया, सीलिंग्स खत्म हो गया, दूर का डिस्टेंस का जो क्या बोलेंगे ट्रेड वगैरह खत्म हो गया, धीरे धीरे एलिमिनेट हो गया, isn't it? सो ये रीजन क्या होगा, क्या बताता है? This is due to climatic change, deforestation, flood, drought and ड्रॉट के वजह से epidemic. डिफोरेस्टेशन हो गया है, isn't it? ड्रॉट के वजह से एपिडेमिक भी हो जाता है, isn't it? फिर इसके अलावा फ्लड्स कौन नदी का फ्लड वजह से फ्लड होता है? इंडस नदी का फ्लड हो जाता है. अच्छा, इसके अलावा बीच में मैं एक बोला था कि जो किसी ने बोला कि रूलर है करके, उसमें के लिए मासिव स्ट्रक्चर्स 2 थिंग्स के बारे में बता इंडिकेट किया था कि 2 चीज हमारे को वहां मिला है. एक मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पैलेस मिला और एक आपका एक और स्टैच्यू मिला था, वो कौन? Priest किंग है. ठीक है. तो इसके बारे में आपको नोट करके रखना है. तो डिफोरेस्टेशन हो गया, एक्सेसिव फ्लड्स हो गया, ये सबको रीजन हो जाता है कि आपका सिविलाइजेशन एंड होने का. ओके. इस पूरे आपने अच्छा आंसर बोल दिया कि ये सारे इनमें से आपको ये समझ में आ गया कि जो आपने आज पढ़ा है सील के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में और वेट्स के बारे में. ठीक है. आप जरूर रीड कर लेना, एक उसको 2 बार सुन लेना, क्योंकि बोर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि बोर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए इतना बड़ा चीज है नहीं, इसलिए मैंने बोर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है. अगर आपको बोर्ड एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो प्लीज आप मुझे यू मे प्लीज कन्वे द मैसेज दैट इज दैट आई वी वांट बोर्ड एक्सप्लेनेशन नोट्स वंस अगेन, सो दैट इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इफ यू वांट. अदरवाइज इफ यू आर सैटिस्फाइड विद दिस
type of lecturing, then that also you may please inform me, right? So today you read once again that about the seals, sealings and script and waves. देन आपका एंशियंट अथॉरिटी के बारे में, किंग और व्यूज सबको जरूर पढ़ना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको उसके बारे में पढ़ना है, किसका, कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। जो आज मैंने पढ़ाया, क्वेश्चंस पूछा, उसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आई एम सेंडिंग विद दिस वीडियो ओनली, अपलोडिंग टुमारो, ठीक है, विद दिस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।